Let's head into the newscast with the latest coming in on coronavirus as cases continue to rise in India. In the last 24 hours, more than 48,000 COVID-19 cases have been reported. 705 people have succumbed to the virus in the last 24 hours. The total number of cases have now risen to more than 1,385,000. The death toll has risen to 32,063. India continues to be the third worst hit country in the world. On your screen, the numbers that show the rising COVID-19 cases in India. And on your screen are the number of coronavirus deaths that have also been recorded in the past week. As you can see, there was a peak in the numbers between July 22nd and 23rd in terms of the number of deaths in India. Let's now take a look at the number of coronavirus cases in states and union territories. Around 8.85 lakh patients have recovered so far. The recovery rate has been recorded at 63.91%. The national capital Delhi has shown improvement with a little more than 12,000 active cases. Kerala, the state which had controlled the COVID-19 outbreak initially, experienced the highest single-day spike. It recorded more than 1,000 new COVID-19 cases. Tamil Nadu and Gujarat also recorded highest single-day spike. Tamil Nadu recorded close to 7,000 new cases, while Gujarat recorded more than 1,000 new infections. Maharashtra's Chief Minister Uddhav Thackeray will launch a plasma donation program on July 27th. Meanwhile, during his monthly radio address, Prime Minister Narendra Modi said that the COVID-19 is spreading fast and the threat still remains high. He said that even though the recovery rate in India is better than other countries, social distancing should be followed and people should continue to wear masks. मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले कुछ महीनों से पूरे देश ने एकजुट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। निश्चित रूप से एक भी व्यक्ति को खोना दुखद है, लेकिन भारत अपने लाखों देशवासियों का जीवन बचाने में सफल भी रहा है। लेकिन साथियों, कोरोना का खतरा टला नहीं है। कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है। हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ये ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था। इसलिए हमें पूरी सावधानी बरतनी है। चेहरे पर मास्क लगाना या गमछे का उपयोग करना, 2 गज की दूरी, लगातार हाथ धोना, कहीं पर भी थूकना नहीं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, यही हमारे हथियार हैं जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं।